Ninth topic, linear equation and two variables. Subtopic, draw graph of a linear equation and two variables. पहले हमें ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ किस तरह हम बना सकते हैं. We draw two lines one is horizontal line is called x-axis, and another line which intersects x-axis at point O, this vertical line is called y-axis. The point at which the two lines intersect each other is called origin. Or point of intersection. These two lines make four quadrants. Quadrant first, quadrant second, quadrant third, and quadrant fourth. ऑरिजिन के जो दाएं तरफ वहां आते हैं मस्बत वैल्यूज. On the right side of origin there are positive values, and on the left side of origin are negative values. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, and on the right side 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 and so on. In the left side of vertical axis there are positive values +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 and so on. On the right side -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. In quadrant first the values of x are positive. पहले क्वाड्रेंट में पहले खाने में जो x के वैल्यूज हैं वो मस्बत होते हैं, मस्बत वैल्यूज इसमें आते हैं, और y के मस्बत वैल्यूज इसी खाने में आते हैं. In first quadrant the values of x are positive and values of y are positive. In quadrant second इसमें x के जो मनफी वैल्यूज होते हैं वो इसमें आते हैं और y के मस्बत वैल्यूज इसमें आते हैं. और तीसरे क्वाड्रेंट में x के भी मनफी आते हैं और y के वैल्यूज भी नेगेटिव. इन क्वाड्रेंट 4 x के वैल्यूज मस्बत होते हैं और y के वैल्यूज मनफी होते हैं. This is how we draw the graph of a linear equation and two variables. Dear students, now we start our exercise 3.4. Draw a graph of a linear equation and two variables. Linear equation
and two variables is an equation ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers. Real numbers is product of rational numbers and irrational numbers. Now we draw a graph of a linear equation in two variables x plus y is equal to 4. Our question number first. We have x plus y is equal to 4, which implies that x is equal to 4 minus y. जो y यहां बाएं तरफ है, ये उसकी निशानी है मस्बत. जब हमने उसको दाएं तरफ लाया है तो इसकी निशानी चेंज हो गई, वो अब मनफी बन गया. अब हमारी इक्वेशन है x is equal to 4 minus y. Now we make a table here. Here x, y. यहां हम रखेंगे x के वैल्यूज और यहां पर लिखेंगे y के वैल्यूज. When we put y is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 4 और वैल्यू y का हमने रखा है 0, 4 minus 0 which is equal to 4. The first point is when y is 0 तो x का वैल्यू हमें 4 निकला. Again, when we put y is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 4. हाँ, वैल्यू का कीमत हमने रखा है 1, वो 4 minus 1 implies that x is equal to 4 minus 1 is 3. अब हम टेबल में लिखेंगे y का वैल्यू हमने रखा है 1 और x हमें 3 के बराबर निकला. Again we put y is equal to 2, y is equal to 2, x is equal to 4. हाँ, वैल्यू का y का वैल्यू है 2, 4 minus 2 which is equal to 2. तो जब हमने y का कीमत रखा है 2 तो x का कीमत भी 2 आ. And when we put y is equal to 4, x is equal to 4 और वैल्यू ऑफ y is 4, 4 minus 4 is 0. तो जब हमने y का कीमत 4 रखा है तो x का कीमत 0 आ. Now we plot the graph of these points.
plot the graph of points 4, 0, 3, 1, 2, 2, 0, 4. 4 is called ordinate and 0 is called abscissa. On the graph paper. अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका ग्राफ पेपर पर suppose this is our graph paper. These are called vertical lines. Now we draw the graph of these points on the graph paper. Suppose this is our x-axis, this line, and this line is our y-axis. हाँ, अब हमें पहला पॉइंट है 4, 0, वो x की तरफ हमें 4 जाना है, 1, 2, 3, 4 और y की जगह 0 है. This point we mark here 4, 0. और दूसरा पॉइंट है 3, 0. x की तरफ हम 3 लेंगे, 1, 2, 3 और y की तरफ मस्बत है ये दोनों. This point is called 3, 1. हाँ, और तीसरा पॉइंट है हमारा 2, 2. x की तरफ हम राइट हैंड साइड में 2 जाएंगे और y की मस्बत की तरफ हम 2 पॉइंट जाएंगे. और हमने यहां पॉइंट मार्क किया है 2, 2. हाँ, अब चौथा पॉइंट है हमारा 0, 4. x is 0 at the origin and y is 4. 1 plus 4. 1, 2, 3, 4. 0, 4. Now we join these points. अब हमने इन पॉइंटों को ज्वाइन किया, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. नाउ अब हमें और एक डेफिनेशन मिल गई कि लीनियर इक्वेशन ऑफ ए 2 वेरिएबल्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ.
linear equation of a two variable equation is that which form a straight line graph. हाँ बच्चों, अब हम इसी पर अपना आज का लेसन इख्तिताम करेंगे।